Hello, class 7th. I hope you are doing well and enjoying the discussion on the topics of science with me. So, today is a video about the chapter number 10 of science multiplication in plants. So, in this chapter, we are going to learn about the multiplication pattern in plants. There are two basic things we are going to learn in this chapter, that is the asexual mode of reproduction in plants and the sexual mode of reproduction in plants. So without delaying, let's have a look at the introduction of this chapter. So students, all living organisms have an instinct to live their own lives and produce new ones of their own kind. This is instinct is helped by the process of multiplication or reproduction, that is the creation of the new living organism of their own kind from the existing ones, है ना? This process is known as reproduction बेटा. So this is the ability of an organism to reproduce or produce the living organism of their own kind by some processes. And बेटा इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है देखते हैं यहाँ पे. Because it ensures the survival and the continuation of plant species, है ना. Second thing is diversity. New variation through reproduction is seen many of the times. And the third thing is plants adapt to changing environment. So the study of this topic is very much important. So that is why we are discussing this thing, the multiplication pattern in plants, here in class 7th. Students, plant multiply or reproduce by different methods. These methods are grouped into two categories. First is the asexual reproduction and the second is the sexual reproduction. So, to understand the difference between asexual and sexual reproduction, let us first study in detail the pattern or the parts of a flower. कि क्या क्या कैसे कैसे flower होता है और क्यों, what is the significance of studying the parts of a flower. Students, we know that a flowering plant has roots, stem, and leaves and flowers. Root, stem, and leaves are the vegetative part, and the flowers are the reproductive part of a plant body. And the reproduction process, ये पूरा होता कैसे है, whenever the male part and the female part of the flower they combine together producing the gametes, है ना. तो उसके बाद ये प्रोसेस हमें देखने के लिए मिलता है. आप as you can see here, the things here are petals, the stamen, and the pistil. These are the parts shown in the diagram. So this is, है ना, this bright color and sent to attract pollinator, है ना. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो ब्राइट कलर का पार्ट यहाँ पे फ्लावर का है, दिस इज द पेटल. एंड द सेकेंड थिंग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग पोलेंस, जहाँ पे ये पोलेंस होते हैं उसको बोलते हैं क्या, स्टेमन बोलते हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज द पिस्टल. Now, after studying the various parts of the flower, let's have a look at the first mode of reproduction in plant, that is the asexual reproduction in plants. So, plants we know that can reproduce without sexual fusion. Also, in the asexual reproduction, plants are able to produce new plants without the formation of gametes, that is the sex cells, है ना. In this process asexual reproduction, only single parent is involved, students, है ना. Why this process is important? Because it helps in the rapid propagation, the quick and efficient way it is to create new plants. Second thing is genetic similarity. We get the new ones that are generally genetically similar to the पेरेंट प्लांट. सेकेंड एंड द थर्ड थिंग आपने देखा यहाँ पे कि बेनिफिट इसका क्या होता है कि प्रिजर्व डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ अ प्लांट. अगर आपको प्रिजर्व रखना है कुछ चीजें की ट्रेट्स जो होने चाहिए इन द अपकमिंग जो ऑफ स्प्रिंग्स हो रहे हैं, है ना, तो वो आप सिमिलर रख सकते हैं बाय दिस प्रोसेस. दिस इज नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. Students, the asexual mode of reproduction can be done in various methods, like vegetative propagation, the fission method, the fragmentation, the spore formation, and the budding. So here in this slide we are going to discuss the vegetative propagation in plants. So vegetative propagation is basically the growing of new ones, the new plants, by the vegetative part of the plant like the root, stem, and the leaves.
और ये हम किस किस तरह से कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Basically we can done or we can perform it in by cutting, by layering and grafting. अब देखिए कटिंग में क्या होता है. कटिंग में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है कि सेक्शन ऑफ स्टेम्स और रूट्स आर प्लांटेड. तो जो स्टेम को और रूट को आप वो पार्ट कट करके डायरेक्टली प्लांट करते हैं जो फिर ग्रो करता है. तो दिस प्रोसेस इज कटिंग. और ये आ रहा है किसमें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कटिंग करके आप ग्रो कर रहे हैं प्लांट को. सेकंड थिंग इज लेयरिंग. अब लेयरिंग आप कैसे करेंगे. स्टेम्स आर बेंट एंड कवर्ड विद सोइल टू फॉर्म रूट्स. ठीक है, तो दिस इज लेयरिंग. द थर्ड थिंग इज द ग्राफ्टिंग. अब ग्राफ्टिंग में आप कैसे करेंगे, जॉइनिंग अ स्टेम और बड ऑन टू अनदर प्लांट्स रूट सिस्टम. अदर कोई प्लांट है उसका रूट सिस्टम है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, या तो उसका स्टेम या उसकी बड को आप क्या कर रहे हैं, उस पर ग्रो करते हैं. तो दिस इज नॉन एज ग्राफ्टिंग. जैसे आपने देखा होगा कि रोज रोज को प्लांट जो है अब वो ग्रो करते हैं इस तरह से. दिस इज ग्राफ्टिंग मेथड. सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ कमिंग ऑन टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. So now is the sexual reproduction in plants, students. It involves basically the fusion of male and female gametes. Most plants reproduce sexually, and sexual reproduction हमारे लिए क्यों helpful है plants के लिए? Because it helps a plant in overcoming the bad weather condition and the weather season. तो ये ओवरकम करने में हेल्प करता है. और फ्लावर्स हमें पता है बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स. सीड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. देखिए बेसिकली क्या होता है कि फ्लावर हमारा है, फ्लावर के अंदर हमारा मेल सेक्स ऑर्गन भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा. जैसे कि एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन द स्लाइड्स कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और वहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉम द एंथर एंथर से क्या होगा कि वहां से ट्रांसफर होगा, हमारा जो मेल गैमेट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, इन द स्टिग्मा दैट इज देयर इन द पिस्टल ऑफ अ फ्लावर. तो वहां से जब दोनों चीजें हमारी कंबाइन होती है दैट रिजल्ट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. और ये किस किस तरह से हमारे सामने हो सकता है, दैट कैन टेक प्लेस बाय द पोलिनेशन प्रोसेस. पोलिनेशन के प्रोसेस से हो सकता है, जिसमें कि बेसिकली क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. Second thing is the fertilization. Fertilization कैसे होगा, fusion of male and female gametes. And the third thing is the seed development. Fertilized ovule becomes a seed. देखिए तो तीन तरह से pollination, fertilization and seed development. So this is the sexual reproduction in plants. बहुत important हमारे लिए होता है. Yes. Now the pollination in plants. तो बेटा pollination I have explained it to you. It is the transfer of the pollen or the anther from the male part to the stigma or the pistil, है ना. तो ये कैसे होता है, pollination की help से होता है. This process is known as pollination. A pollination may be of two type, that is of are self pollination and the cross pollination. अब self pollination क्या है, और ये टर्म जो क्रॉस पोलिनेशन है ये हमारे सामने क्या है, एज द नेम डिपिक्ट्स. सेल्फ पोलिनेशन में बेटा क्या होता है, पोलन्स आर फ्रॉम द सेम फ्लावर, है ना. इट टेक प्लेस विद इन अ सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर का हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंगेज रहेगा किसके साथ, फीमेल पार्ट के साथ एंगेज रहता है. तो दैट इज द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर. एंड द इन क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस in between two different flowers. अब ये कैसे कैसे हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स क्यों हो रहा है, बिकॉज द पोलन्स आर वेरी लाइट इन वेट. सो देयर आर वेरियस एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, लाइक कि पोलिनेशन में टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड और वाटर और other agents like animals, insects, birds, है ना. So this is the pollination in plants. Now, after this process of pollination in plants, the germination process starts. तो ये germination कैसे होता है बेटा, germination of pollens. It is the process of pollen grain forming a tube. देखिए ट्यूब फॉर्मेशन यहाँ पे हो, तो ट्यूब फॉर्मेशन के बाद travels down the style to reach the ovule, है ना. You can see the various things in the diagram. Here is the embryo sac, ovary, pollen tube, style, stigma, पोलन ग्रेन्स. तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि पोलन ग्रेन्स आर हियर एंड देन दे आर ट्रेवलिंग डाउनवर्ड, है ना, नीचे ये जा रहे हैं, दे आर ट्रेवलिंग टू द ओव्यूल पार्ट. देन आफ्टर द ट्रेवल
traveling of the pollen to the downward to the ovule part, the fertilization of the male gamete with the female gamete take place, है ना. उसके बाद फिर क्या होता है, then the seed containing the embryo begins to form. तो in this manner the sexual reproduction in plants take place. I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी बेटा. So this is all we have to talk about in this chapter. So we have learned two main things, major things. First is the asexual mode of reproduction in plants and the second is the sexual mode. Asexual mode में हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है बाय द कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग. ये चीजें हमने इसमें लर्न करी. और सेक्सुअल में हमने देखा है कि क्या होता है कि पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सो आई होप कि आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.